Assalamualaikum everyone, this is Wazir Rahman. Welcome back to my first ever YouTube video. Who am I? I am currently an MBBS intern. तो जो MBBS internship होती है तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि आई एम गेटिंग ट्रेन्ड टू ट्रीट पेशेंट्स. एंड इफ़ यू गाइज नो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थोड़ी बहुत हेक्टिक होते हैं, तो मेरी इंटर्नशिप ऐसी है, थोड़ी बहुत हेक्टिक चल रही है. बट आई हैव अ टारगेट, अ गोल, जो कि अगस्त 30 को है. नीट पीजी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉजंट इन टच विद द थियोरी सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स इन जनरल, क्योंकि बस ट्रेनिंग चल रही है. एंड पूरा दिन हॉस्पिटल में काम करने के बाद आपके जो स्टेप काउंट्स हैं, दैट इज़ लिटरली ओवर 20K. आई जस्ट शो यू दैट वीडियो. एंड घर आते ही लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, एंड आई हैव ज़ीरो मोटिवेशन. सो द बेस्ट वे टू मोटिवेट योर सेल्फ इज़ टू मोटिवेट अदर्स. तो रूल सिंपल है कि इफ़ आई एम अकाउंटेबल देन आई विल बी स्टडिंग. तो इसलिए मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, चले नहीं चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ मी स्टडिंग. सो डेली मैं पढ़ाई के व्लॉग्स डालूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को मोटिवेट करूँगा. होपफुली यू गाइस विल जॉइन विथ मी. सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, हार्ड वर्किंग वाला, थोड़ा बहुत हसल वाला, देन डू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो टू मोटिवेट अदर्स. साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं. डजंट मैटर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. I'll just share my tips, you guys share yours in comment section, and let's make a community that is productive. So yeah, let's get started. तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. So if you guys are familiar with NEET PG और MBBS in general, तो currently मैं मेडिसिन कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही बड़ा है मेडिसिन. इसमें पर्टिकुलरली मैंने कार्डियोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो अभी मैं गैस्ट्रो में अटका हुआ हूँ. सो आई एम स्टार्टिंग विद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई विल कीप अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स. 5 मिनट का ब्रेक लेंगे जिसमें आई टॉक टू यू. अभी टाइम बज रहा है करीब 11:30. लेट मी जस्ट शो यू द क्लॉक. इट्स 11:30 PM. So if I'm studying for over 3 hours, then it'll be 2:30 AM. Late night study है. I'm excited. I hope you are as well. Let's get started. So 25 मिनट का टाइमर रेडी है, 25 मिनट का टाइमर. My iPad is ready. So first thing is you have to set goals no matter what. तो to do list पहले लिख लेते हैं. So all right, I'm done with 25 minutes of studying. Actually, I'm quite exhausted. तो थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन है, but we are going to make that up. No excuses for not studying. We will continue to study. जो हमने 3 hours का टारगेट रखा था, no matter what, without excuses, I will study. So I'll just show you what I've done in this last 25 minutes. तो ये जो टॉपिक है GI disorders, I've done almost 4 pages of it, and it wasn't passive learning. So मैंने क्या किया, I read the topic, फिर I recollected it, and खुद को मैंने, जो आईना है as you can see in front, इसमें I just taught it to myself or presented to myself, ताकि active learning हो. And this is the most important thing learning में. Never just keep reading and will feel asleep or something. आपको बीच बीच में खुद को पढ़ाना है या explain करना है, ताकि it turns out into an active process, and दिमाग को पता चले भाई कि it is important and आपको सीखना है. This is how learning is. It is hard, थोड़ा बहुत difficult रहेगा, but the more you irritate your brain, the better it is. थोड़ा thought process चलना चाहिए. That is how learning goes, okay? So always make your learning active than passive. So I'll see you in another session. तब तक मैं नीचे जाता हूँ. I'll see if I can make some black coffee or something. थोड़ा जगना पड़ेगा. We will do it. Let's go. Ready with the black coffee and 25 minutes. Let's go.
Alright, guys, so finally, session 2 done. I actually went more than 25 minutes because मैं interested था and I wanted to complete the topic badly. So let's see, it's time for truth कि मैंने कितने pages complete किए. Oh, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So almost हमने 6 पेज complete किए active learning के साथ in 25 minutes, which is really great thing. And अभी लगभग it's almost 1 a.m. and I started at 11:30, तो half an hour इधर उधर waste हो गया. But I'm done with 2 sessions. I'm really happy. 5 minute का break लेते हैं and I'm back to another session. Hopefully you guys are enjoying this vlog. Let's go. So third session, let's go, guys. Let's start. Alright, guys, our third session is finally over, and yes, I had taken a break in between, so it's 2:20 a.m. I've started a new chapter, hepatic disorders. जो पुराना वाला topic था, that is almost done, and I've quizzed myself. Basically, I've made a game. So it's maybe, as you guys can see under the quiz. Oh, sorry, Siri. No, I didn't call you. Bye. Okay. So as you can see, I've got all the questions correct, most of them. It's like 230 XP. If you want to check out this game, I will surely put a link down below. So it's about gamification. Matlab ke whenever we study. I've added it. No, please shut up. Okay, Siri comes in routine. I'm really sorry. इसका मतलब क्या है कि I study a topic. My primary source of studying right now is that Marrow revision वाले notes that I've got from Marrow. And what I've done is I've made MCQ style. So I've seen one pattern कि जब भी मैं hospital में रहता हूँ and I see cases, I tend to remember the case better. So what I've done is I've put those notes into an AI app and I've made games. That is, I've made real life case scenarios, and using those case scenarios, I'm solving questions, MCQ type. If you want to check out, I'll put that link down below. Surely go check it out. Okay, so 3 sessions done. It's 2:20 a.m. Alright, so the thing is कि mom is scolding me. उन्होंने बोला कि आओ वापस सो जाओ. It is 2:30 a.m. So obviously okay, that's okay. So I'm going down. I'll be sleeping now, and hopefully I'll cover up my backlog tomorrow. Okay, it's okay. Something's better than nothing. If I had not shot this video, I wouldn't have even studied this 1.5 hour. But I'm happy. It's good for day 1. I'll see you soon in day 2. There is this important saying कि if you can't run, walk. If you can't walk, crawl. If you can't crawl, try to move. Something like that. It's all about progression. It is about consistency. So yeah, I'll come back tomorrow, and you guys will join with me, hopefully. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe if you enjoyed this vlog. And yeah, I'm done with it. Let's see you tomorrow. Goodbye.